Hello and welcome back and back and back. And today we have got Indigo by the great Mr. Satyajit Ray. तो अधिकतर लोगों को तो ये पता था कि वो मूवीज बनाते थे एक्चुअली एंड ऑस्कर भी जीता हुआ है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट आई सपोज बट ही वाज आल्सो अ प्रोलिफिक राइटर इनफैक्ट राइटिंग से उनकी लाइफ ज़्यादा चलती थी इन टर्म्स ऑफ द लाइवलीहुड देन द मूवीज बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंडिगो प्लीज डाउनलोड दिस ऐप ऑब्सेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए टू गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ फ्री मटेरियल स्पेशली द पीडीएफ्स दैट वी यूज इन आवर लेक्चर्स वो आपको फ्री मिलता है तो जल्दी से कर लो यार ऑलराइट द ग्रेट मैन Satyajit Ray was one of India's greatest filmmakers and the only Indian director to receive an honorary Academy Award, that is, Oscar. He was a multi-talented personality who worked as a director, screenwriter, author, essayist, illustrator, lyricist, music composer, and editor. भगवान जिसको creativity देता है भर भर के देता है. So he was absolutely a creative genius. His most celebrated works include the Apu trilogy, The Music Room, The Big City, and Charulata. Born on 2nd May 1921 in Calcutta, Ray directed 36 films, including feature films and documentaries. His debut film, Pathar Panchali, won 11 international awards. During his remarkable career, he received 36 National Film Awards, an honorary degree from Oxford University, and the Bharat Ratna for his outstanding contribution to Indian cinema. The top अवार्ड जो है वो इनको मिल चुका है ही एक्चुअली वाज अ रत्न अ थीम ऑफ द स्टोरी थोड़ा पैरानॉर्मल है बस भूत द स्टोरी इंडिगो रिवॉल्व्स अराउंड अनिरुद्ध बोस who experiences strange and mysterious events while staying in the house of a former indigo tax collector. All right, तो इसकी खेती हुआ करती थी और इंडियंस को बहुत टॉर्चर किया था अंग्रेजों ने इसकी खेती के लिए. The central theme is the stream of consciousness, where Aniruddha's mind remains his own but appears trapped in another person's body, making him helpless to control his actions. The story blends reality with supernatural and explores the themes of identity, memory, dreams, and the influence of the past. अगर आपने मूवी का नाम सुना है इंसेप्शन और देखा है तो फिर से देख लो, एक बार में समझ में आती नहीं है बाय द वे. ऑलराइट, ऐसी बिकॉज it talks about dreams. It suggests that Aniruddha may have relived the tax collector's final moments on the 100th anniversary of his death. Another important theme is the restless soul of the tax collector, whose greed and cruel treatment of indigo plantation workers left him filled with guilt and regret. Thus, indigo symbolizes greed, exploitation, injustice, and the haunting effects of one's past एक्शंस. तो अब हम चलते हैं कहानी की तरफ कि एक्चुअली होता क्या है एंड दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द स्टोरी. ऑलराइट, कि कुछ पैरानॉर्मल सुपरनैचुरल चीजें एक्सपीरियंस करता है हमारा जो मेन कैरेक्टर है अनिरुद्ध बोस का. ऑलराइट, फर्स्ट पर्सन में जो है नरेट किया हुआ है. ऑलराइट, दुमका जा रहे हैं 135 माइल्स, दोज ऑफ यू फ्रॉम बंगाल, especially in and around Kolkata. Hello. Chaliye. My name is Aniruddh Bose. I'm 29 years old and a bachelor. 29 years old and a bachelor. भाई MCQs आते हैं यार, एज वेज थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा. For the last 8 years, I have been working in an advertising agency in Calcutta. With the salary I get, I live in reasonable comfort in a flat in Sardar Shankar Road. तो जितनी तनख्वाह मिलती है आराम से जिंदगी कट रही है. एक फ्लैट में रह रहे हैं हम लोग सरदार शंकर रोड पे. द फ्लैट हैज 2 साउथ फेसिंग रूम्स एंड इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर. तो अब ये पिक्चर हमारे सामने बनाई जा रही कि फ्लैट इज इट्स द 2 रूम सेट ऑन द ग्राउंड फ्लोर. 2 years ago I bought an Ambassador. Yes, this car, the iconic Ambassador, सरकारी बाबुओं की निशानी. 2 years ago I bought an Ambassador car which I drive myself. I do a bit of writing in my spare time. 3 of my stories have been published in magazines and have been well appreciated by my acquaintances, but I know I cannot make a living by writing alone. Acquaintances are the people, you know, they're not exactly friends, but हाँ, एक civil
बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, और भाई साहब क्या करते हैं, और बच्चे कैसे हैं, कहाँ पढ़ने भेज दिया, ये सब बातें अकाउंटेंसेस वाली होती हैं। दोस्तों से तो हम तमीज से बात ही नहीं करते, पहली बात तो। Alright, so 3 of my stories have been published in magazines and have been well appreciated by my acquaintances, but I know I cannot make a living by writing alone. तो इसीलिए ये जॉब है कहाँ पे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। अनिरुद्ध बोस, for the last few months I haven't been writing at all, और पिछले कुछ महीनों से तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। Instead, I have read a lot about indigo plantations in Bengal and Bihar in the 19th century. लिखा नहीं है लेकिन पढ़ा बहुत है। I am something of an authority on the subject now. और इतना पढ़ लिया है कि मुझे लग रहा है कि मैं सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हूं। People can expect the details from me which they cannot from anybody else. I am an authority on the subject. How the British exploited the poor peasants, how the peasants rose in revolt, and how finally with the invention of synthetic indigo in Germany, the cultivation of indigo was wiped out from our country. All this I know by heart. और ये सब चीजें मुझे रटी हुई हैं कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कैसे क्रूल्टी हुई है, कैसे रिवोल्ट हुआ है, और कैसे सिंथेटिक इंडिगो इन जर्मनी जब इन्वेंशन वहां पे हुआ है, सिंथेटिक इंडिगो का जब इन्वेंशन हो गया है कहां पे, जर्मनी में, तो ऑल दीज पाइल्ड अप एंड हमें इंडिगो प्लांटेशन से छुट्टी मिली। ऑल दिस आई नो बाय हार्ट। इट इज टू डिस्क्राइब द टेरिबल एक्सपीरियंस विच inculcated in me this interest in indigo that I have taken up my pen today. और मैंने इतना ज्यादा इंडिगो प्लांटेशन के बारे में, उस हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है कि आज मेरी कलम खुद ब खुद उठ रही है। So he has read a lot about indigo plantation and the exploitation and the cruelty and the revolt. At this point, I must tell you something about my past. And अब मैं आपको थोड़ा अपने past के बारे में बता देता हूँ। My father was a well-known physician in मुंगेर जिला बिहार में, a town in Bihar. मुंगेर जिला नहीं होगा, मुंगेर टाउन ही है फिर। I have a friend from मुंगेर, I suppose. पूछूंगा उससे, भाई जिला है कि सिर्फ टाउन है? That is where I was born and that is where I did my schooling in a missionary school. और अगर आपको मुंगेर के बारे में पता है तो कमेंट कर देना यार, everybody will know. That is where I was born and that is where I did my schooling in a missionary school. I have a brother 5 years older than me. He studied medicine in England and is now attached to a hospital in a suburb of London called Golders Green. He has no plans to return to India. अच्छा, मुंगेर में पढ़ाई लिखाई किया। एक बड़ा भाई है 5 साल बड़ा, जो कि इंग्लैंड में मेडिसिन पढ़ी उसने, एंड इज अटैच्ड टू अ हॉस्पिटल इन द सबर्ब, जो शहर के सेंट्रल एरिया से थोड़ा दूर होता है, दैट इज सबर्ब्स। ऑलराइट, हाँ। एंड वो लौटने वाला नहीं है इंडिया, तो इस समय अभी ये अकेले ही हैं। द फर्स्ट लाइन ही सेड, माय नेम इज दिस एंड आई एम 29 years old एंड आई एम अ बैचलर। तो बैचलर भी है, भाई भी बाहर है, अंदर इंडिया वापस लौटने का मन नहीं उसका। My father died when I was 16. Now, he was very young when his father passed away. Soon after his death, my mother and I left Munger and came to Calcutta, where we stayed with my maternal uncle. Maternal uncle, मम्मी के भाई, मतलब मामा जी। तो मामा जी के पास आ गए लोग। I went to St. Xavier's College and took my bachelor's degree. So St. Xavier's माना जाना कॉलेज है कोलकाता का। He seems to come from a very good family actually. भाई मेडिसिन में है, ये St. Xavier से पास आउट है। Okay. Soon after that, I got my job with the advertising agency. और St. Xavier's के बाद ही, अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद, he got a job in an advertising agency. My uncle's influence helped, बट आई वॉजंट एन अनवर्दी कैंडिडेट माई सेल्फ। और अंकल का इन्फ्लुएंस था, मतलब उन्होंने थोड़ी सिफारिश लगाई, लोगों से बात किया कि यार मेरा भांजा है, प्लीज देख लीजिए। बट येस, आई वॉज नॉट एन अनवर्दी कैंडिडेट, विच मीन्स मेरे में भी टैलेंट था। बॉस, कॉलेज तो सभी जाते हैं, अच्छे कॉलेज भी सभी जाते हैं, बट देन अगेन वहां पे जो रियली टैलेंटेड होता है, ही और शी गेट्स अहेड, और बाकी लोग थोड़े मीडियोकर दुनिया में फंस के रह जाते हैं। तो दिस अनिरुद्ध सेज कि यार अंकल ने ठीक है थोड़ा सिफारिश लगाया होगा, बट फैक्ट ये है दैट आई वाज worthy of the job that I got. I had been a good student. I spoke English fluently, and most of all, I had the ability to carry myself well in an interview. Communication skills. 1 year, 2 years from now, when you're appearing for all those competitive exams, and if they have an interview, boss, 15% weightage होता है interview का इन सारे exams में.
जो एंट्रेंस कॉलेज एंट्रेंसेस होते हैं, तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हिच मींस how you speak, how you dress, how you look, how you emote, everything counts. My early years in Munger had instilled certain habits in me which I have not been able to give up. और बचपन में कुछ आदतें हैं वो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ. One of these was an overpowering desire. Overpowering desire मतलब you can't control this. It overpowers you. हावी हो जाता है. Overpowering desire to go far away from the hectic, very busy life that is of Calcutta from time to time. और time to time मेरा मन करता है ये सब छोड़ के कहीं दूर निकल लेते हैं. I had done so several times ever since I bought my car. और जब से कार खरीदी है दोस्तों, कार उठाओ और गाने सुनते हुए निकल लो. On weekends I made trips to Diamond Harbour, Port Canning and the Hassanabad along the Dum Dum Road. Each time I had gone alone because, to be quite honest, I didn't really have a close friend in Calcutta. और Calcutta में कोई close friend था नहीं, भाई भी नहीं था और father passed away when he was just 16. तो अकेले ही ड्राइव कर लेता था. That is why Pramod's letter, now another character comes in, that is Pramod. Pramod's letter made me so happy. Pramod had been my classmate in Munger. After I came away to Calcutta, we continued to keep in touch for 3 or 4 years. Then perhaps it was I who stopped writing. अब पहले व्हाट्सएप तो हुआ नहीं करता था कि रोज एक अंकल ने फैमिली ग्रुप में भेज दिया बड़ा सा ज्ञान, ठीक, तो चिट्ठियां. इनफैक्ट आई रिमेंबर माई सेल्फ व्हेन वी केम आउट ऑफ स्कूल इन 1996, तो माई फ्रेंड एंड आई हु स्टेड इन द सेम सिटी, लखनऊ में रहते थे, हार्डली से 5-7 किलोमीटर्स अवे, वी यूज्ड टू राइट लेटर्स. मिलना भी इतना नहीं हो पाता था, फोन मोबाइल था नहीं हमारे पास, लैंडलाइन was still a problem to kind of stay in touch that way. तो चिट्ठियां लिख के भेजे, भाई ये लो और बताओ, और एक हफ्ते में रिप्लाई आएगा. गुड स्लो डेज यार, नॉट बैड एक्चुअली. हाँ, तो क्या हुआ कि 3-4 साल तो लेटर्स एक्सचेंज हुए, बट देन परहैप्स मैंने ही लिखना छोड़ दिया. सडनली द अदर डे when I came back from work, I found a letter from Pramod waiting for me on my desk. और कई दिनों बाद प्रमोद का एक लेटर मिलता है मुझे. He had written from Dumka. I have a job in the forest department here. I have my own quarters. Why don't you take a week's leave and come over? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब है, मेरा अपना सरकारी क्वार्टर्स है, आ जाओ एक हफ्ते की छुट्टी पे मजा करेंगे यार. प्रमोद की ये चिट्ठी थी. ऑलराइट बेटा, प्लीज मेक अ नोट. For accommodation, for place of accommodation, you say quarters and not quarter. Okay? And a week's leave. It could be a leave of 1 week or it could be a week's leave. दोनों चलता है, ऑफ लगा लो या apostrophe s लगा लो, ठीक. तो please make a note of these two things. Grammar, don't forget. Some leave was due to me. मेरी छुट्टियां बची हुई थी. So I spoke to my boss and on the 27th of April, on the 27th of April, भाई डेट डाली है तो कोई वजह होगी. I shall remember the date. I shall remember the date as long as I live, which means very important. MCQs, 27th of April. I packed my bags and set off for Dumka. और मैं निकल पड़ा दुमका की ओर. Pramod hadn't suggested that I go by car. It was my idea. Dumka was 200 miles away, so it would take about 5 or 6 hours at the most. I decided to have a big breakfast, set off by 10 and reach there before dusk. शाम होने के पहले ही हम दुमका पहुंच जाएंगे, ये भाई का प्लान था. 200 माइल्स अवे है, 5-6 घंटे लगेंगे, जल्दी खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं और निकल लेते हैं. 10 बजे निकलेंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे. एटलीस्ट दैट वाज द प्लान. नॉर्मली हम प्लान बहुत बनाते हैं और पुल ऑफ नहीं कर पाते हैं, तो ये कह रहे हैं एटलीस्ट दैट वाज द प्लान. बट देयर वाज अ स्नैक. एक रुकावट आ गई, एक कमी आ गई, एक स्नेच आ गया. At least that was the plan, but there was a snag right at the start. शुरुआत में ही दिक्कत. क्या हुआ? I had my meal and was about to put a pan into my mouth. Beetu, yes, pan खा के चलेंगे. Dumka ना dumka. I had my meal and was about to put a pan in my mouth when my father's old friend Uncle Mohit suddenly turned up. निकलने वाले थे यार, Uncle Mohit आ गए. ठीक. He is a grave old man, serious old man whom I was meeting after 10 years. और वो 10 साल बाद दिखाई पड़े हैं मुझे. So there was no question of giving him short shrift. Short shrift मतलब एक impolite behavior, not rude but yeah, you're not welcoming. इस तरह से तो
ऐसा भी आई कुड नॉट बिहेव विद हिम लाइक दैट बिकॉज वी वर सीइंग ईच अदर आफ्टर 10 years और वो मेरे पापा के दोस्त थे यार ऑब्वियसली. आई हैड टू ऑफर हिम टी एंड लिसन टू हिम चैट फॉर ओवर एन आवर. और 1 घंटे उन्होंने हमसे गप्पे लड़ाई, चाय पी और उसके बाद चले गए. I saw Uncle Mohit off and shoved my suitcase and bedding into the back seat of my car. Just then, my ground floor neighbor Bhola Babu walked up with his 4-year-old son Pintu in tow. Pintu in tow, साथ में Pintu भी था. Where are you off to all by yourself? Bhola Babu asked. अरे अपने आप अकेले अकेले कहाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? When I told him, he said with some concern. जब बताया कि यार हम दुमका निकल रहे हैं, कार से 200 मील दूर है. But that's a long way. Shouldn't you have arranged for a driver? एक ड्राइवर ले लेते यार साथ में. I said I was very cautious driver myself and that I had taken such care of my car that it was still as good as new. So there is nothing to worry about. मैं बढ़िया ड्राइविंग करता हूँ यार, आराम से चलते हैं और कार भी मैंने बढ़िया मेंटेन कर रखी है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. It will be managed. भोला बाबू wish me luck and went into the house. भोला बाबू बोले भाई good luck और चले गए. I glanced, looked at my wristwatch before turning the ignition key. It was 10 minutes past 11. तो 10 बजे का प्लान था, लगभग 1 घंटा 10 मिनट देर से तो स्टार्ट हुई है इनकी. Although I avoided Howrah and took the Bali Bridge road, it took me an hour and a half to reach Chandarnagar. Driving through dingy towns, these first 30 miles were so dreary, so boring, so taxing that the fun of a car journey was quite लॉस्ट. मतलब इतना आपको ट्रैफिक नेगोशिएट करना पड़ रहा है, मोड़ना पड़ रहा है, भीड़ से बचना पड़ रहा है कि ड्राइविंग का मजा ही चला गया पूरा. बट फ्रॉम फर्स्ट 30 माइल्स के बाद, बट फ्रॉम देयर ऑन एज द कार इमर्ज्ड इनटू ओपन कंट्री, मतलब अब थोड़ा रूरल एरिया में पहुंचे, कंट्री साइड, द इफेक्ट वाज मैजिकल. Where in the city did one get to see such a clear blue sky free from chimney smoke and breathe air so pure and so redolent of the smell of earth? जो जैसे बारिश गिरी हो और जो अर्थ की स्मेल आती है, तो इतनी स्मेल और कहां मिलेगी, शहरों में तो नहीं मिलती. At about 12:30, as I was nearing Burdwan, I began to feel the consequence of having eaten so early. और ब्रेकफास्ट इन्होंने जल्दी लिया था, हेवी लिया था लेकिन जल्दी ले लिया था. तो अब क्या हुआ, लग गई भूख इनको. Hungry, I pulled up by the station, रुके, which fell on the way, went into a restaurant and had a light meal of toast, omelette and coffee. और ये breakfast part 2 repeat किया इन्होंने. Then I resumed my journey. I still had 135 miles to go. तो लगभग 55 miles शायद इन्होंने कवर किए हैं. 65 I suppose. All right. And अभी भी 135 बाकी है. 20 miles from Burdwan, there was a small town called Panagarh. There I had to leave the Grand Trunk Road and take the road to Ilam Bazar. From Ilam Bazar, the road went via Suri and Massanjor to Dumka. तो इन्होंने ये रास्ता जो है लिया हुआ था. ठीक, स्मॉल टाउन कॉल्ड पानागढ़, पानागढ़ से ग्रैंड ट्रंक रोड छोड़ते हैं और रोड टू इलम बाजार, इलम बाजार से फिर जाते हैं सूरी एंड सूरी से मैसेंजोर और मैसेंजोर से दुमका. ठीक, तो ये इनका रास्ता था, क्लियर इन हिज हेड. The military camp at Panagarh had just come into view when there was a bang from the rear of my car. I had a flat tire. The tire puncture हो गया. I got down. I had a spare tire जो of course डिक्की में रहता है आजकल हमारे, ठीक है, Stepney. हाँ. I got down. I had a spare tire and could easily fit it. The thought that other cars would go whizzing by, zoom करके निकल रही हैं, their occupants laughing at my predicament. Predicament एक जो है you can say an uncertain situation या थोड़ी bad situation. All right. Was not a pleasant one. Okay, I had a spare tire and could easily fit it. The thought that other cars would go whizzing by, their occupants laughing at my predicament, was not a pleasant one. ये thought कि यार लोग मेरे पे हंसते हुए निकल जा रहे हैं, बहुत अच्छा thought तो नहीं था. Nevertheless, I brought out the jack from the boot and set to work. But मरता क्या ना करता, जैक निकाला और टायर चेंज करना स्टार्ट कर दिया. By the time I finished putting the new tire on, I was dripping with sweat. It is a physical activity basically. कोई फोन चला के थोड़ा बदल देगा वो, ठीक? तो he was dripping with sweat. My watch showed 2:30. 2:30 बज चुका है. I had turned muggy in the meantime. Muggy बिल्कुल chip sweaty. Okay. My watch showed 2:30. It had turned muggy in the meantime. All right.
यहाँ पे सॉरी, टर्न मगी इन द मीन टाइम ही इज टॉकिंग अबाउट द वेदर। ठीक है, तो थोड़ा वैसा वेदर हो रहा है, बारिश टाइप का। द कूल ब्रीज विच वॉज ब्लोइंग इवन एन आवर अगो वॉज मेकिंग द बैम्बू ट्री स्वे एंड वॉज मेकिंग द बैम्बू ट्री स्वे हैड स्टॉप्ड। नाउ एवरीथिंग वॉज स्टिल। As I got back into the car, I noticed a blue-black patch in the west above the tree tops, clouds. और जैसा होता है ना बारिश के पहले बिल्कुल ह्यूमिड हो जाता है, एकदम हवा रुक जाती है और फिर वो बादल धड़म से गिरते हैं। Was a storm brewing up? A nor'wester? और अब इनको लगा यार ये तो आंधी तूफान आने वाला है। It was useless to speculate. It was useless to guess. I must drive faster. I helped myself to some hot tea from the flask and resumed my journey. तो टायर वायर चेंज किया, चाय पी और बोले भैया निकलो, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है। But before I could cross Ilam Bazaar, I was caught in the storm. लेकिन स्टॉर्म आने वाली थी और आ गई, तो इलम बाजार क्रॉस भी नहीं कर पाए थे और फंस जाते हैं आंधी में। I had enjoyed such nor'westers in the past, sitting in my room and had even recited Tagore poems to myself to blend with the mood. और बारिश हो रही है, आप घर में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बाहर देख रहे हैं बालकनी से, क्या मजा है, वो अलग है। अगर आप सड़क पे फंस गए हैं भीड़ भाड़ में और बारिश में, वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता है। यहाँ भीड़ तो नहीं थी लेकिन हाँ स्टॉर्म तो था। I had no idea that driving through open country, such a nor'wester could strike terror into the heart. और जो घर पे अच्छा लग रहा था आपको, कंट्री साइड में वो उतना अच्छा नहीं लग रहा। इनफैक्ट इट कुड स्ट्राइक टेरर, डरावना हो जाता है। Claps of thunder always make me uncomfortable. They seem to show a nasty side of nature, a vicious assault, a dangerous assault on helpless humanity. It seemed as if the shafts of lightning were all aimed at my poor ambassador, and one of them was sure to find its mark sooner or later. अब आप खुले में खड़े हो और बिजली कौन रही है, तो घबराहट हो रही है यार कि ऐसा ना हो बिजली मेरी गाड़ी पे गिर जाए। In this precarious state, uncertain state, I passed Suri and was well on my way to Massenjor when there was yet another bang which no one could mistake for a thunderclap. और एक और bang हुआ and you could figure out कि यार ये thunderclap तो नहीं है, बिजली तो नहीं है ये। I realized that another of my tires had decided to call it a day. To call it a day, retire. I have had enough. I won't work anymore. एक और पंक्चर हो गया। I gave up hope. Oh, it was a spare टायर भी यूज कर चुके हैं, जो दूसरा पीछे रखा है वो ऑलरेडी फ्लैट है और एक और फ्लैट हो गया। I gave up hope. It was now pouring with rain. My watch said 5:30. ये बिफोर डस्क पहुंचने वाले थे, 5:30 यही हो गया है। For the last 20 miles, I had to keep the speedometer down to 15, or I would have been well past Messenger by now. और स्पीडोमीटर 15 पे धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ी है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, अदरवाइज मैसेंजर पार कर गए होते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, प्लीज मेक अ नोट, had, दिस इज पास्ट परफेक्ट। आई had to drive, दिस इज पास्ट परफेक्ट। वेयर वॉज आई? अप अहेड नथिंग वॉज विजिबल, स्टॉर्म है रिमेंबर। थ्रू द रेन स्वेप्ट windscreen, the wiper was on, but its efforts were more frolicsome than effective. Frolicsome is basically playful. वो मजाक ही लग रहा है, वो वाइपर जो बस चल रहे हैं बट कोई खास काम नहीं कर रहे हैं। It being April, the sun should still be up, but it seemed more like late evening. तो 5:30 पे लग रहा है कि अंधेरा होने लगा है। I opened the door on my right slightly and looked out. What I saw didn't suggest the presence of a town, though I could make out a couple of buildings through the trees. तो टाउन तो नहीं दिखा, हाँ एक दो बिल्डिंग्स दिखे जो कि ट्रीज के थ्रू मुझे दिख पा रहे थे। There was no question of getting out of the car and exploring, but one thing was clear enough. There were no shops along the road as far as the eye could see. Shops तो एक भी नहीं थी। Mind you, this guy has got a flat tire. In fact, he has got 2 flat tires. तो इनको शॉप चाहिए भैया, कोई मैकेनिक मिल जाए एटलीस्ट रिपेयर तो कर पाए। एंड आई हैड नो मोर स्पेयर टायर्स, एज आई सेड। प्रॉब्लम है, अब स्पेयर टायर्स नहीं हमारे पास। आफ्टर वेटिंग इन द कार फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, it struck me that no other vehicle had passed by in all this time. और कार में लगभग 15 मिनट्स वेट किया और उनको लगा यार कोई और गाड़ी आई नहीं अभी तक, हम अकेले यहाँ पे। Was I on the right road? There had been no mistake up to Suri, but suppose I had taken a wrong turning after that. It was not impossible in the blinding rain. And now he is in doubt. He says यार लगता है एक टर्न मिस कर गए हैं
और गलती से किसी और रोड पे आ गए हैं. But even if I had made a mistake, it was not as if I had strayed in the jungles of Africa or South America. है तो अपना ही ना यार देश, निकल आएंगे. Wherever I was, there was no doubt that I was still in the district of Birbhum, within 50 miles of Shantiniketan, and as soon as the rain stopped, my troubles would be over. I might even find a repair shop within a mile or so. तो कहता है ऐसा थोड़ा है कि अफ्रीका के जंगलों में फंसे हुए हैं, थोड़ी आगे पीछे होगा, निकल जाएंगे, बारिश रुकेगी, मे बी मेरे को एक मैकेनिक भी मिल जाए और टायर्स भी रिपेयर हो जाएंगे. I pulled out a packet of bills from my pocket and lit a cigarette. और भाई बैचलर थे, अकेले रहते थे, पैसा कमा रहे थे, शौक है, सिगरेट भी निकाली. I recalled Bola Babu's warning. बोला बाबू ने सुबह कहा था कि ड्राइवर ले लो गुरु. He must have gone through the same trying experience. Or how could he have given me such a sound advice? In future, honk, honk, honk. सोच ही रहे थे और पीछे से हॉर्न की बजने की आवाज आ रही. I turned around and saw a truck standing behind. Why was it blowing its horn? Was it standing right in the middle of the road? The rain had let up a little. थोड़ा धीरे हो गई थी बेटा. I opened the door, got out and found that it was no fault of the truck. When my tire burst, the car had swerved at an angle. थोड़ा सा लहरा गई जिसे कहते हैं, ठीक है? That is swerve. At an angle and was now blocking most of the road. There was no room for the truck to pass. गाड़ी थोड़ी सी लहर के ऐसे खड़ी हो गई थी सड़क पे कि ट्रक के निकलने की जगह नहीं बची वहां पे. Take the car to one side, sir. The sick driver had by now come out of the truck. बोला सर थोड़ी गाड़ी हटा लो, हम निकल जाएं. What's the matter? He asked. A puncture? I shrugged to convey my state of helplessness. बोला नहीं बोला. Yes, you can see. If you could lend a hand, थोड़ी मदद कर दो. I said we could move the car to one side and let you pass. The sick driver's helper came out too. The three of us pushed the car to one side of the road. Then I found out from the two men that I was indeed on the wrong road for Dumka. तो जो doubt था वो सच हो गया. I had taken a wrong turning and would have to drive back 3 miles to get back on the right track. I also learned that there were no repair shops nearby. और कोई repair shop है भी नहीं, तो उस flat tire से ही आपको drive करना पड़ेगा. The truck went on its way. और सरदार जी निकल गए अपना लेके ट्रक. As its noise faded away, the truth struck me like a hammer blow. और अब इनको स्ट्राइक किया कि ओ बॉस फंस गए, मौसम भी खराब है, गाड़ी भी पंक्चर है, रास्ता भी गलत ले लिया है, सारे कर्म हो गए. I had reached a dead end. There was no way I could reach Dumka that night, and I had no idea how and where I would spend the night. तो दुमका तो गुरु पहुंच नहीं पाएंगे और कहाँ रुकेंगे ये भी आइडिया नहीं, कि आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा है. Maybe a couple of buildings, as he said, through the trees. The roadside puddles वो जो खड्डे हो जाते हैं, इसमें पानी भर जाता है बारिश में, were alive with the chorus of frogs. The rain had now been reduced to a light drizzle. I got back into the car and was about to light a second cigarette. Stress में तो दूसरी cigarette. When I spotted a light through the window on my side. I opened the door again. Through the branches of a tree, I saw a rectangle of orange light. Rectangle of orange light मतलब window. यहाँ से light आ रही है. Just as smoke meant the presence of fire, a kerosene lamp meant the presence of a human being. जैसे जहां धुआं उठता है वहां आग लगती है, तो जहां केरोसिन लैम्प जल रहा है वहां पे इंसान पाया जाएगा. सही बात है, जानवर आके तो चलाएंगे नहीं केरोसिन लैम्प. There was a house nearby and there were occupants in it. और लोग वहां रह रहे थे. I got out of the car with my torch. The window wasn't too far away. I had to go and investigate. There was a narrow footpath branching off from the main road, which seemed to go in the direction of the house with the window. I locked the car and set off. तो कार लॉक किया और उस घर की तरफ चलते हैं. I made my way avoiding puddles as far as possible. As I passed a tamarind tree, the house came into view. Well, hardly a house. It was a small cottage with a corrugated tin roof. Corrugated जो ऐसे ऐसे करके बनाई थी tin roof. ठीक है? This is corrugated, bent. Through an open door, I could see a hurricane lantern and the leg of a bed. इतना इनको lantern दिख गई और जो है bed दिख रहा है. Hurricane basically तूफान होता है, ठीक है? Is anybody there? I called out. A stocky, well-built, middle-aged man with a thick mustache came out of the room and squinted. Light पड़ रही है तो उसने ऐसे करके देखा होगा. Squinted at my torch. I turned the spot away from his face. हमने torch उसके चेहरे से हटा दिया. Where are you from, sir? The man asked. In a few words, I described my
प्रिडिकेमेंट, मैंने अपनी जो खराब कंडीशन सिचुएशन थी उसको एक्सप्लेन किया, यार ऐसा ऐसा हुआ, गलत आ गया हूँ, टायर भी बस्ट कर गया, मौसम भी खराब है, दुमका जाना था, पहुंच नहीं पाएंगे। अब इज देयर अ प्लेस हियर वेयर आई कैन स्पेंड द नाइट? आई आस्क्ड। आई शैल पे फॉर इट ऑफ कोर्स, पैसे की कमी नहीं है अनिरुद्ध बोस के पास, पैसा हम दे देंगे। इन द डार्क बंगलो यू मीन? वो बंदा कहता है आप डाक बंगलो में रुक जाओगे? डाक बंगलो? I didn't see any dark bungalow. But immediately I realized my mistake. I had followed the light of the lantern and had therefore failed to look around. Now I turned the torch to my left and immediately a large bungalow came into view. You mean that one? I asked. Yes, sir. But there is no bedding and you can't have meals there. वहाँ आप खा नहीं सकते और bedding भी नहीं है। इनको बंगलो उस समय नहीं दिखा था because he was focusing totally on the window. तो अब बंगलो उनको दिखा जब उन्हें टॉर्च इधर उधर घुमाई। I am carrying my own bedding, I said. I hope there's a bed there. Yes, sir. A charpoy. एक चारपाई है, चिंता मत करो। बेडिंग अगर आपके पास है तो प्रॉब्लम सॉर्टेड। And I see there is a stove lit in your room. You must be cooking your own meal. और कहता है आप खाना भी बना, अब भूख भी लगी है भाई साहब को, शाम हो गई है, ठीक है। The man broke into a smile and asked if I would care for coarse chapatis prepared by him and urad ka dal cooked by his wife. I said it would do very nicely. I liked all kinds of chapatis and urad was my favorite dal. बोले दाल रोटी मिल जाए भैया, कुछ खाने को मिल जाए, इस समय सब सही है, सब अच्छा है। I don't know what the bungalow must have been like in its heyday, in its good old days, prime days. But now it was hardly what one understood by a dark bungalow. But अभी ना वो ऐसा कुछ भी उसका जो आप कह सकते हैं the grandeur of a bungalow वो बिल्कुल नहीं बचा था, खंडर टाइप का हो गया शायद। कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द राज ब्रिटिशर्स, व्हेन इंडिया वाज स्टिल नॉट फ्री। द बेडरूम वाज लार्ज एंड सीलिंग वाज हाई। द फर्नीचर कंसिस्टेड ऑफ अ चारपॉय, अ टेबल सेट अगेंस्ट द वॉल ऑन वन साइड एंड अ चेयर विद अ ब्रोकन आर्म। तो ये तीन चीजें दिखाई पड़ी, एक चारपाई है, एक टेबल है और एक कुर्सी है जिसकी एक आर्म टूटी हुई है। द चौकीदार or the caretaker that is, had in the meantime lit a lantern for me. He now put it on the table. What's your name? I asked. Sukhan Ram, sir. Has anybody ever lived in this bungalow or am I the first one? Oh, no, sir. Others have come too. There was a gentleman who stayed here for 2 nights last winter. Sir, ऐसा नहीं आप पहले हो, पिछले साल एक gentleman आए थे, वो 2 रातें रुके यहाँ पे winters में। I hope there are no ghosts here. I said in a jocular tone, jocular, humorous. मजाक करने की कोशिश की। God forbid, he said. No one has ever complained of ghosts. किसी ने शिकायत तो नहीं की है आज तक। I must say, I found his words reassuring. थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, मैं शायद सुनना चाह रहा था कि यार कुछ कहानी सुना देगा ये, but he said नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप रिलैक्स रह जाओ। That was reassuring. If a place is spooky and old dark bungalows have a reputation for being so, it will be so at all times. When was this bungalow built? I asked. और अगर किसी जगह में ये भूत प्रेत रह रहे हैं तो हमेशा रहेंगे ना, फिर इट कांट बी कि कहीं से आ जाएंगे। सो ही सेड, ही आस्क्ड, व्हेन वाज दिस बंगलो बिल्ट? आई आस्क्ड। सुखन began to unroll my bedding and said, this used to be a sahib's bungalow, sir. एक गोरा साहिब, उनका बंगलो था सर ये। A sahib? Yes, sir. An indigo planter. There used to be an indigo factory close by. Now only the chimney is standing. And don't forget, beta, at the start of the chapter he said कि मैंने indigo plantation की हिस्ट्री पूरी पढ़ रखी है, मैं अथॉरिटी ऑन इट। और अब ये कुछ रिलेशन यहां पे निकल के आ रहा है। ये किसका बंगलो था? एक फिरंग, अंग्रेज का, गोरे का, ब्रिटिशर, जो एक इंडिगो प्लांटर था। तो ऑब्वियसली ही मस्ट हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स, ही मस्ट हैव बीन क्रूअल। अब कुछ स्टोरी देखिए, फ्रेम एक बन रहा है यहां पे। I knew indigo was cultivated in these parts at one time. I had seen ruins of indigo factories in Munger too in my childhood. It was 10:30, हो गई रात, when I went to bed after dining on Sukhan's coarse chapatis and urad ka dal. तो खाने पीने के बाद 10:30 पे अपन बेड पे। I had sent a telegram to Pramod from Calcutta saying that I would arrive this afternoon. अच्छा, टेलीग्राम भेजा था प्रमोद को कि मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। भाई साहब 10:30 तो यहां पे हैं। He would naturally wonder what had happened, but it was useless to think of that now. Can't make a phone call. ये वो दिन नहीं है, WhatsApp, phone call, video call, nothing. कोई communication नहीं है, कोई correspondence नहीं है। All I could do now was congratulate myself on having found a shelter, and that too without much
trouble. और इस समय ना I would be just grateful that I found this place to stay for a night and ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ. In future, I would do as Bola Babu had advised. और आगे ना मैं बोला बाबू की बात मानूंगा, ड्राइवर लेके चलूंगा. I had learned a lesson, and lessons learned the hard way are not forgotten easily. और जो लेसन आपने मुश्किलों से सीखा हो वो भूलते नहीं है बॉस. तो इनकी हालत खराब है इस समय. I put the lantern in the adjoining bathroom. The little light that seeped through, मतलब थोड़ा सा स्पेस रखा है तो यहां से लाइट आ रही है, seeped through the door which I had kept slightly ajar, slightly open, was enough. Usually I find it difficult to sleep with the light on, and yet I did not extinguish, bujhana the light, even though what I really badly needed now was sleep. और चूंकि डार्क बंगलो ये वो जो भी एटमॉस्फेयर रहा हो, मैंने उसको जलता हुआ ही छोड़ दिया. I was worried about my car, which I had left standing on the road, but it was certainly safer to do so in a village than in the city. तो शहर में तो प्रॉब्लम हो सकती थी चोरी की, यहाँ कोई है भी नहीं आसपास, तो विलेज के लोग थोड़े सीधे होते हैं, गाड़ी लेके कहीं जाएंगे, तो शायद गाड़ी सेफ है. The car is safe here. The sound of drizzle had stopped, बारिश रुक गई. The air was now filled with croaking of frogs and the shrill chirping of crickets. तो ट्र ट्र सब हो रहा है. From my bed in that ancient bungalow, in this remote village, the city seemed to belong to another planet. और ये दुनिया और वो दुनिया में जमीन आसमान का फर्क. Indigo. I thought of the play by Deenabandhu Mitra, Neil Dorpan, The Mirror of Indigo. As a college student, I had watched a performance of it in a theater on Cornwallis Street. अच्छा, अब now those thoughts are coming back to him. कि ओके इंडिगो, मैंने ये प्ले भी देखा हुआ था, और ये बंगला किसका था? एक इंडिगो प्लांटर का था, जो कि एक ब्रिटिशर था ड्यूरिंग द राज. आई डिडंट नो हाउ लॉन्ग आई हैड स्लेप्ट व्हेन अ साउंड सडनली अवेकन्ड मी. अब शुरू होता है नाटक बॉस. कुछ ही देर सोए थे, अब पता नहीं कितनी देर सोए थे, एक आवाज आई धम, और उठे. धम नहीं आई, इनफैक्ट समथिंग वाज स्क्रैचिंग एट द डोर. स्क्रैच कर रहा है. द डोर वाज बोल्टेड. दरवाजा तो बंद था अंदर से. Must be a dog or a jackal, I thought, and in a minute or so the noise stopped. और 1-2 मिनट में आवाज रुक गई. I shut my eyes in an effort to sleep, but the barking of a dog put an end to my efforts. तो पहले तो स्क्रैचिंग आवाज आई, अब एक डॉग बार्क करना स्टार्ट कर देता है. This was not the bark of a stray village dog, but the unmistakable bay of a hound. और ये कोई स्ट्रीट डॉग की बार्क नहीं थी, ये एक हाउंड के बार्क करने का तरीका है. बे ऑफ अ हाउंड. आई वॉज फेमिलियर विद इट. हाउ 2 houses away from us in Munger lived Mr. Martin. He had a hound which bayed just like this. तो ये पहचानता था उस तरह की बार्क को. This Anirudh Bose kind of figured it out कि this is a hound. Who on earth kept a pet hound here? I thought of opening the door to find out, as the sound seemed quite near. But then I thought, why bother? It was better to get some more sleep. What time was it now? Okay, यार एक बार सोचा चलो दरवाजा खोल के देखते हैं यहाँ पे हाउंड किसने पाल रखा है. But then he thought to himself, यार सो जाते हैं. It's better to have sleep because he actually had to travel the next day as well. अभी पहुंचे कहाँ है तुमका? What time was it now? A faint moonlight came in through the window. I raised my left hand to glance at the wristwatch and gave a start. My wristwatch was gone. और हो गई चोरी. इन्होंने हाथ उठाया टाइम देखने के लिए. There is no wristwatch. It was gone. And yet, because it was an automatic watch, I always wore it to bed. Where did it disappear? And how? Were there thieves around? What would happen to my car then? घड़ी चोरी हो गई यार कमरे से. अब कार का क्या होगा if there are thieves around? I felt beside my pillow for my torch and found it gone too. The torch was also gone. अब ये चीजें स्पूकी थिंग्स हैव स्टार्टेड टू हैपन. स्क्रैचिंग हो रही है, हाउंड बे कर रहा है, द रिस्टवॉच इज गॉन, द टॉर्च इज गॉन. oops. I jumped out of bed, knelt on the floor and looked underneath it. My suitcase too had disappeared. Suitcase भी गया. My head started spinning. Something had to be done about it. I called out, Chaukidar. There was no answer. I went to the door and found that it was still bolted. The window had bars. So how did the thief enter? तो thief आया कैसे यार? दरवाजा बंद है, खिड़कियों में बार्स लगे हुए हैं. You can't come inside without cutting them. How the hell? And plus,
घड़ी और टॉर्च तो ठीक है, सूटकेस तो बड़ा होता है, वो भी चले गया. As I was about to unfasten, खोलना उसको, ठीक है, fasten the belt, I glanced at my hand and experienced an odd feeling. Had whitewash from the wall got onto my hand, or was it white powder? Why did it look so pale? और अपना हाथ देखा थोड़ी सी रोशनी में, तो इंडियन ब्राउन स्किन उलट इतनी पेल नहीं होती है. दिस वॉज लुकिंग वेरी वेरी पेल, एक्चुअली white. I had gone to bed wearing a vest. Why then was I now wearing a long sleeved silk shirt? I felt a throbbing in my head. Dhamak, dham, dham in my head. I opened the door and went out into the veranda. Chaukidar. The word that came out was spoken with the unmistakable accent of an Englishman. भाई वो जो गोरा साहब थे ना, जो इंडिगो प्लांटर, उनकी आत्मा आ गई है इनके अंदर. तो दिखने भी लगे, हाथ जो है वो गोरे हो गए, और जो आवाज निकाली है वो चौकीदार ने चौकीदार एक्सेंट के साथ आई है वहां पे, विद ब्रिटिश एक्सेंट. ओ माय गॉड. And when and where was the chowkidar, and where was his little cottage? There was now a wide open field in front of the bungalow. In the distance was a building with a high chimney. The surroundings were unusually quiet. They had changed, and so had I. दो बिल्डिंग्स थे, बगल में बंगला दिख रहा था. अभी क्या है, कुछ नहीं, ओपन फील्ड है, जस्ट द बंगलो, एंड सराउंडिंग सारे बदल चुके हैं. मैं खुद भी बदल चुका हूं, एक्सेंट तक चेंज हो चुकी है. आई केम बैक इनटू द बेडरूम इन अ स्वेट और नर्वसनेस, स्केयर. माय आईज हैड गॉट यूज्ड टू डार्कनेस. अब when you enter into dark room coming from outside, तो कुछ देर तक आपको दिखाई नहीं पड़ता है. Then it adjusts. I could now clearly make out the details. The bed was there, but it was covered with a mosquito net. I hadn't been using one. Mosquito net नहीं था पहले. The pillow too was unlike the one I had brought with me. This one had a border with frills. और भाई अंग्रेज था, राज था, तो pillow had frills. Luxury. Yeah. Mine didn't. The table and the chair stood where they did, all right, but they had lost their aged look. But they didn't look so old. जब मैं आया था उसका आर्मरेस्ट भी नहीं था एक चेयर का तो. The varnished wood shone even in the soft light. उसमें पॉलिश था तो चमक रही थी बिल्कुल. On the table stood not a lantern but a kerosene lamp with an ornate shade. और बढ़िया सुंदर सा एक लैंप रखा हुआ था उस पे. There were other objects in the room which gradually came into view. A pair of steel trunks in the corner, a folding bracket on the wall from which hung a coat, an unfamiliar type of headgear, and a hunting crop. Unfamiliar type of headgear, जो उनकी जो British hat होती थी शायद, वो रखी हुई है. Below the bracket, standing against the wall, was a pair of galoshes. Rubber boots, ठीक है, जो पहनते हैं. I turned away from the objects and took another look at myself. Till now, I had only noticed the silk shirt. Now I saw the narrow trousers and the socks. Are you getting my point? अब वो गोरा साहब में convert हो चुका है पूरा. The dress, the accent, the way he looks. I didn't have shoes on, but saw a pair of black boots on the floor by the bed. I passed my right hand over my face and realized that not only my complexion, but my features too had changed. तो कॉम्प्लेक्शन तो बदला, चेहरा भी छू के भाई साहब फेस बदल गया मेरा. I didn't possess such sharp nose, nor such thin lips or narrow chin. I felt the hair on my head and found that it was wavy and that there were sideburns which reached below my ear. Sideburns, ये जो कलम, तो ये बड़ी सी अंग्रेजों जैसे होती थी, तो कान के नीचे तक वो. And चेहरा sharp हो गया, like Europeans. In spite of my surprise and terror, I suddenly felt a great urge to find out what I looked like. But where to find a mirror? और डर लग रहा है और सरप्राइज भी है, लेकिन फिर भी अब देखना चाह रहा हूं कि at this time, how do I look? मिरर कहां है? I strode, moved towards the bathroom, opened the door with a sharp push and went in. There had been nothing there but a bucket. पहले जब सोने आए थे तो केवल एक बाल्टी रखी हुई थी यार. Now I saw a metal bathtub and a mug kept on a stool beside it. अब देखिए एक्सप्लॉयटेशन की हद देखिए. Back then, this is an indigo planter. He is living in a bungalow full of luxury. और exploit कर रहा है इंडियंस को. ठीक,
अब पॉइंट इज, इसने पूरी हिस्ट्री पढ़ रखी है इंडिगो प्लांटेशन की, सो मे बी दैट इज प्लेइंग ऑन हिज माइंड, अकेला है, एंड मे बी दैट हैज टेकन ओवर. There had been nothing there but a bucket. Now I saw a metal bathtub and a mug kept on a stool beside it. The thing I was looking for was right in front of me, an oval mirror fixed to a dressing table. There's a dressing table as well. As I said, पूरे luxury में है. अब mirror दिखा इनको. I looked into it, but the person reflected in it was not me. लेकिन वहाँ जो दिखा मुझे, प्रतिबिंब दिखा, जो reflection दिखा, it wasn't mine. It wasn't mine. I looked into it, but the person reflected in it was not me. By some devilish trick, I had turned into a 19th century Englishman with a sallow complexion, a pale complexion, blonde hair, and light eyes from which shone a strange mixture of hardness and suffering. और आंखों में एक hardness and suffering दिख रही है. How old would the Englishman be? Not more than 30, but it looked as if either illness or hard work or both had aged him prematurely. और 30 साल का होगा, लेकिन बहुत ज्यादा लग रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क और मे बी बिकॉज ही वॉज ill. I went closer and had a good look at my face, which was no more his face actually. As I looked, a deep sigh rose from the depths of my heart. और एक आह सी निकली हमारे दिल से. The voice was not mine. The sigh too expressed not my feelings but those of the Englishman. This is basically the Englishman looking at himself in the mirror. And Anirudh Bose is experiencing that. तो body में trap हो चुका है वो. What followed made it clear that all my limbs were acting of their own volition. बेटा, acting of their own volition, of their own free will. उनकी जैसी मर्जी वैसे चल रहे थे वो. Free will. And yet it was surprising that I, Anirudh Bose, was perfectly aware of the change in identity. But I didn't know if the change was permanent or if there was any way to regain my lost self. I could feel the change, but I had no clue whether it was permanent or I could get back to what I was. I came back to the bedroom. Now I glanced at the table. Below the lamp was a notebook bound in leather. It was open at a blank page. और वो blank page पे खुली हुई थी वो. Beside it was an inkwell with a quill pen dipped in it. Quill pen जो birds के feather से बनाया गया है. ठीक है, तो आगे उसका नोक है और वो inkwell में dip करिए और लिखिए. I walked over to the table. Some unseen force made me sit in the chair and pick up the pen with my right hand. The hand now moved towards the left-hand page of the notebook, and the silent room was filled with the noise of a quill scratching the blank page. This is what I wrote. And कोई unseen force ने इनको वहां बिठा दिया, इनके हाथ में कलम और इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया. I started writing, and this is what I wrote. 27th April 1868. 100 साल पहले. Those fiendish mosquitoes are singing in my ears again. So that's how the son of a mighty empire had to meet his end. ये लिखा है बेटा, ये डायरी में लिखा हुआ है. ठीक है, हाँ. So that's how the son of a mighty empire has to meet his end at the hands of a tiny insect. इनको काट लिया मच्छर ने, हो गया मलेरिया, ये हैं जाने वाले अब. Okay, so he's writing maybe the last thing. What strange will of God is this? Eric has made his escape. Percy and Tony too left earlier. Perhaps I was greedier than them. So in spite of repeated attacks of malaria, I could not resist the lure of indigo. अब वो accept कर रहा है इस बात को कि यार I was a very greedy person. And malaria फैल रहा था, लोग यहाँ से निकल रहे थे, मुझे भी चले जाना चाहिए था. But I was perhaps greedier than most and I stayed back. No, not only that, one mustn't lie in one's diary. और अपनी डायरी में झूठ नहीं बोलना चाहिए. My countrymen know me only too well. I didn't lead a blameless life at home either. And they surely have not forgotten that. और कहता है यार मैं actually I'm not a good person. I will not lie in my diary that I was just greedy. अगर आप उन लोगों से पूछो मैं कैसा आदमी था तो भी बहुत अच्छी बातें नहीं बोलेंगे. Did not lead a blameless life at home either. I know I will have to stay here and lay down my life on this alien soil. He comes from England. So for him, India is alien. My place will be beside the graves of my wife, Mary, and my dear little son, Toby. He has lost his family to malaria as well.
I have treated the natives here so badly. There is no one to shed a tear at my passing away. और मैंने इतना बुरा इनके साथ ट्रीटमेंट किया है, इनको मारा पीटा, प्रॉब्ली एक्सप्लॉइट किया है, कोई रोने वाला नहीं है मेरी डेथ के बाद. Perhaps Mirjan would miss me, my faithful trusted bearer Mirjan. And Rex, my real worry is about Rex. Alas, faithful Rex. Faithful Rex matlab pet dog. Now you see that hound, आवाज being of a hound. All right. When I die, these people will not spare you. They will either stone you or club you to death. If only I could do something about you. And after I die, Rex will be left all alone. And then the villagers, the workers whom I treated so badly, I exploited so badly, they will pour all their anger on Rex and they will stone or club him to death. I could write no more. The hands were shaking. Not mine, the diarist's. I put down the pen. Then my right hand dropped and moved to the right and made for the handle of the drawer. फिर हाथ drawer की तरफ बढ़ता है. I opened the drawer. I opened it. Inside there was a pin cushion, a brass paperweight, a pipe and some papers. The drawer opened a little more. A metal object glinted, shone, chamka, in the half light. It was a pistol, its butt inlaid with ivory. और ivory से उसको decorate किया गया था उसके butt को. The handle pulled out the pistol. The hand pulled out the pistol. It had stopped shaking. और अब हाथ steady हो गया. A group of jackals cried out. It was as if in answer to the jackal's cry that the hound bayed again. और फिर से hound के bay करने की आवाज आई just to reply to the jackals. I left the chair and advanced towards the door. I went out into the veranda. The field in front was bathed in moonlight. Moon की रोशनी में पूरा नहाया हुआ था. About 10 yards from the veranda stood a large greyhound. He wagged his tail as he saw me. Rex, ये इस इंडिगो प्लांटर का, इस ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर का पेट रेक्स था. It was the same deep English voice. Rex. The echo of the call came floating back from the faraway factory and bamboo grove. Rex! Rex! Rex came up towards the veranda. As he stepped from the grass onto the cement, my right hand rose to my waist, the pistol pointing towards the hound. Rex stopped in his tracks, his eye on the pistol. He gave a low growl. एक low growl. ऐसे करके आवाज निकाली. My right forefinger pressed the trigger. As the gun throbbed with a blinding flash, smoke and the smell of gunpowder filled the air. Rex's lifeless, blood-spattered body lay partly on the veranda and partly on the grass. और इन्होंने अपने ही पेट को मार दिया. Probably thinking that what if I leave him alone? The treatment that he was going to get from the villagers will be far more cruel. So let me make his death easy. The sound of the pistol had wakened the crows in the nearby trees. A hubbub now rose from the direction of the factory. Hubbub, when a lot of people are talking at the same time, that is hubbub. I came back into the bedroom, bolted the door, and sat on the bed. The shouting drew near. और वो शोर पास आने लगा. I placed the still hot muzzle of the pistol by my right ear. और hot muzzle अभी just उससे fire हुआ है, तो it is hot. That is all I remember. I woke up at the sound of knocking. I have brought you tea, sir. सपना देख रहा था यार. Knock हुआ, sir, मैं चाय लाया हूं. Daylight flooded in through the window. Out of sheer habit, my eyes strayed to my left wrist. सुबह उठ के बंदा सबसे पहले टाइम देखता था, आदत थी. तो फिर से वही किया. 13 minutes past 6. Probably 6:15. घड़ी हाथ में है. I brought the watch closer to my eyes to read the date. April the 28th. April 27 को ये सब हो रहा था. 28th. I now opened the door and let Sukhan Ram in. There is a car repair shop half an hour down the road, sir. He said. It will open at 7. तो 45 minutes में वो shop खुल जाएगी. Very good, I said, and proceeded to drink my tea. Would anyone believe me when they heard when they heard of my experience on the night of the 100th anniversary of the death of an English indigo planter in Birbhum? 1968, translated by Satyajit Ray. All right, 1868 की कहानी जो इनको सपने में दिख रही थी. Now,
maybe according to me, when you have read so much about a certain thing, it starts to play in your mind. अगर आपने मुन्ना भाई MBBS पार्ट 2 देखा हो ना, तो इसमें संजय दत्त रीड्स अ लॉट अबाउट महात्मा गांधी, तो उसको बापू दिखने लगता है. यही कुछ यहाँ हुआ. इन्होंने इतना इंडिगो प्लांटेशंस के बारे में पढ़ लिया है, इनको दिखने लगा वो. ऑलराइट, गुड वन. स्टोरी दैट केप्ट यू हुक्ड. यार हाँ, आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये हुआ क्या, और पता लगा शायद सपना देखा था, और आगे अब भाई दुमका निकल लो, अब ना रुको. ठीक है. सो आई थिंक you have a lot of MCQs coming from this one. ठीक है. काफी सारा डेटा ऐसा दिया हुआ है, कितना किलोमीटर ये वो करके. इफ यू रीड इट ट्वाइस, इट इज इजी टू रिमेंबर, नॉट दैट डिफिकल्ट. ऑलराइट, एप्रिसिएशन क्रिटिकल देख लेते हैं. इंडिगो इज अ ग्रिपिंग, it holds your attention all the time. Is a gripping first-person narrative that makes the reader feel personally connected to Aniruddha Bose's mysterious experience. Satyajit Ray skillfully combines realistic storytelling with supernatural elements, leaving readers uncertain whether the events are dreams, memories, or paranormal experiences. Aniruddha's transformation is portrayed convincingly, as his mind remains conscious while he loses control over his body. हाथ अपने आप चल रहा है, बंदूक अपने आप चल गई है, highlighting his helplessness. The story also uses time as an important symbol by transporting Aniruddha 100 years into the past, 1868, 27th April 1868. The disappearance of his wristwatch makes the transition between the present and the past, while the date of the tax collector's death strengthens the connection between the two timeliners, basically the indigo planter. Overall, the story is an engaging blend of mystery, psychology, history, and the supernatural with a thought-provoking and memorable ending. तो ये सारी चीजें आप थीम में यूज कर सकते हैं. मिस्ट्री, साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड द सुपरनैचुरल विद अ थॉट-प्रोवोकिंग एंड मेमोरेबल एंडिंग. यार कौन मानेगा मेरी बात, बट आप इतना ज्यादा पढ़ के बैठे हो, वहीं चले गए फिर. इन द फील्ड्स ऑफ इंडिगो, अनिरुद्ध बोथ किस तरह के हैं? एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, वेल क्वालिफाइड एंड फ्लुएंट हैं. इंग्लिश पहले ही बोला हुआ है यार कि सेंट जेवियर्स का पढ़ा हुआ बंदा है. एडवेंचरस, loves traveling and exploring new places. वो कहते हैं ना, बचपन से कुछ आते हैं जो बदल नहीं पा रहे हैं. Determined, continues despite obstacles and warnings. Sensitive, appreciates nature and is emotionally aware. Helpless, cannot control his actions during the supernatural experience. Writing, drawer, gun, shooting, everything. Indigo planter, greedy, driven by the desire for wealth. उसने accept किया है that I was greedier. Cruel, exploits and mistreats plantation workers. Again, when he's writing in his diary, he's writing the same thing. Guilt-ridden, and he regrets his unjust actions. Lonely, abandoned by his family and friends. Friends have left, family, wife and Toby, they're gone. Inhuman symbolizes British colonial oppression. और inhuman भी है, राज का जो oppression था, वो भी express कर रहा है. And now you got bit of words. Redolent, smelling strongly of something, वो अर्थ की बात करता है कि बारिश के बाद जो अर्थ की स्मेल आती है. ठीक है. So please work very hard with the vocabulary. It will make hell of a difference to your chances when you start appearing for those competitive exams. तो ये आपको फ्री में मिल सकता है अगर आप ये इंस्टॉल करते हैं and you get all the free material from the app itself. So thanks again for staying with me. It was a good one as usual. सारी कहानियां अच्छी हैं, सारी poems अच्छी हैं. Interesting. They all teach us something, maybe about the past, maybe about the future. Keep going.